थैंक यू सर। बहुत मुश्किल है भूपेंद्र यादव जी, स्माइलिंग मिनिस्टर, सिटिंग हियर, अ वेरी ओल्ड एसोसिएशन, उनके खिलाफ कुछ बोलना थोड़ा अजीब लगता है, मगर सर बोलना पड़ेगा। जब आप लोग हंसते हैं तो हमें बहुत डर लगता है, जब आप लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, बिकॉज दैट इज योर ट्रू कैरेक्टर। तो आपको डिविनिटी से एक इंडिकेशन आ रहा है, और इंडिकेशन है कि सफाई करिए, हवा आने दीजिए, फ्री एयर, क्लीन एयर, water will get cleaned on its own. Provide Manipur its right status. Do not control them from here. If you allow them, they are responsible people who live in that city, in that state, they will clean. आपको इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन करवाइए, वहां सरकार बनवाइए, वो पानी का वो जो पानी साफ है उसको करेंगे। आपके पास इतने सारे स्टेट्स आप लोगों ने कंट्रोल कर रखा है, पहले वहां सफाई करवाइए, उसके बाद इसको करिए। मैं आपको बहुत बहुत व्हाट इज द राइट वर्ड टू से इज आई होप and I wish you all success in cleaning the environment of the country, whether it be water or air. Thank you. Thank you, Jaya ji. Susri Swati Maliwal. Susri, please. 1 minute, 1 minute, Maliwal. Business. Water selling has become a business. People are drinking bottled water. And I'm very scared कि मणिपुर को ये बता के कि यहाँ का पानी बहुत पोल्यूटेड है, कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अलग होगी, कोई कंपनी इनकी फेवरेट होगी जो वहाँ पानी बॉटल्ड पानी वहाँ बेचेंगे। सॉरी फॉर दिस बट दैट्स हाउ। स्वाति जी। Sir, what is there in the national education policy? National education policy is advocating for mother tongue based education. My dear friend, Sasmit is coming from a linguistic state, Odisha. Fortunately, it's from my state. Tamil, Malayalam, Telugu, Punjabi, Marathi, Ahomia, Bengali, these are the mother tongues of the many parts of the country. National education policy is giving emphasis to have primary education, early age education through mother tongue. What is the difference between Samagra and NEP? What is the contradictions? NEP is recommending for skill-based education. Employability in the 21st century is a new challenge. We have to write, just now Madam Sudha Murthy ji put a very important question. Innovation should be the part of the school curriculum. These all are reflected in national education policy. This is a part of Samagra. At least Sasmit, don't get into the influence of my dear friend Ran Betas. You are a very good parliamentarian. Support NEP and create. There is a consensus due to few political priority. Few friends have their own spectacles to look into this issue. But Samagra Shiksha, National Education Policy, PM Shri, they are interrelated. Fifth supplementary, Honorable Girirajan. Thank you for me given an opportunity. A detailed memorandum of demands was submitted to Prime Minister Thru Narendra Modi, recently highlighting concern regarding the inordinate delay in the release of central funds under the Samakshara Shiksha scheme. Only of the primary request from Tamil Nadu was the immediate release of rupees 2,151 crore under the Samaskara Shiksha scheme for the financial year of 24 and 25, and an early release of the first installment for 25-26. Sir, I would like to know from the Honourable Minister whether the Union Government would expedite the release of pending dues under the Samaskara Shiksha scheme to Tamil Nadu and give an assurance in the floor of the House that the pending dues of rupees 2,051 crore
would be released immediately to Tamil Nadu. Chairman sir, this question is very genuine also. As I said before, I am ready, I am open. Whether it is Tamil Nadu, Kerala or West Bengal also. West Bengal is a different story. But especially Tamil Nadu, Kerala, we are given partial money to them. सागरिका जी, दादा रुको, मैं बिल्कुल आप सप्लीमेंट्री पूछोगे तो विस्तार से उत्तर दूंगा, क्योंकि आप समग्र के पैसे को पार्टीबाजी में खर्चा कर दिए, आप उसको गड़बड़ कर दिए। Let him reply. Sir, coming back to Tamil Nadu. You please reply. Sir, coming back to No, nothing will go on record except minister's reply. Nothing will go on record except minister's reply. You please be seated. 2 days back, please be seated. Sir, through you, sir, to this August House, especially my friends from Tamil Nadu, those are from the ruling party DMK, I will sincerely appeal them. What is happening there? What is your agitation? Sir, last week, Honorable Supreme Court has given an opinion, not a judgment I can say, it's an opinion. There was a public interest litigation why Tamil Nadu will not implement central school schemes and Jawahar Navodaya Vidyalaya. Congress party is the partner to DMK in that government since long. Jawahar Navodaya Vidyalaya has been envisioned not by BJP government. This is envisioned by previous Congress regime in previous days. Whoever it may be. Shivaji, let me submit I'm submitting to you for your kind consideration. There is no dispute on that. Navodaya Vidyalaya is a quality school coming out in these days. Supreme Court has given opinion what is the hindrance to implement these two schemes, Central School and Navodaya Vidyalaya in Tamil Nadu. Let Government of India should clarify that. We are for that opinion. This quality school also should be implemented in Tamil Nadu. Tamil Nadu cannot put conditions, this much will implement, this much will not implement. This money is not money, this is Tamil Nadu's children's money. Prime Minister Modi is committed to give that money to respective states, also Tamil Nadu. But you have to, this is a federal structure. You have to implement letter and right spirit, with a good spirit, the central schemes. It can be conditional. No. Let him complete the answer. Let him complete the answer, sir. So, question number 32, Sri Naresh Bansal. Thank you, Chairman sir. Question number 32. Sri BL Verma ji. Yes, sir. Now, first supplementary, Sri Naresh Bansal ji. फर्स्ट सप्लीमेंट्री, मैं आपके माध्यम से माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत में नशीली दवाओं और मादक पदार्थों की लत से निपटने के लिए क्या कोई राष्ट्रीय हेल्पलाइन उपलब्ध है? अब तक इस हेल्पलाइन पर कितने कॉल प्राप्त हुए और क्या इस तंत्र को प्रभावी और सफल माना जा रहा है? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन की बात की है, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्रालय ने 24 घंटे एक राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन 1444 का संचालन हो रहा है। इस टोल फ्री हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य नशीले पदार्थ का दुरुपयोग करने वालों को टेली परामर्श प्रदान करना, उन्हें निकटतम नशा मुक्ति केंद्र के लिए रेफर करना भी है और टोल फ्री हेल्पलाइन पर कार्यरत परामर्शदाता, प्रशिक्षित और परामर्शदाता वहां बैठे हुए हैं। टोल फ्री हेल्पलाइन 1444 पर अब तक 4,30,000 से भी ज्यादा कॉल प्राप्त हुए हैं और सफलतापूर्वक ये हेल्पलाइन काम कर रही है। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्री नरेश बंसल जी। धन्यवाद सर। मैं आपके माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत
किसी आध्यात्मिक या धार्मिक संस्था के सहयोग के लिए संपर्क किया गया है? यदि हाँ, तो इस सहयोग से अब तक कितने व्यक्तियों तक प्रभावी पहुंच या परिवर्तन सुनिश्चित हुआ है? सभापति महोदय,